सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग और आप देख रहे हो अपने भाई का चैनल फ्यूल फैक्टर। सो गाइस आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस आज अपन बहुत धमाका करने वाले हैं ये ब्लॉग में, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 5 बाइक्स बताने वाला हूं जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। एंड ये जैसी लॉन्च होंगे भाई पूरे बाइक इंडस्ट्री में कमाई होने वाली है। कॉज इनके स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स मैं आपको जब बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे कि बाइक इसमें बनाया क्या गया है, करा क्या गया है। न्यू जैसी न्यू डिजाइन न्यू सब 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 न्यू है। सो गाइस वेस्टिंग टाइम, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि है न्यू जनरेशन की ड्यूक 390 which comes with new alloy wheels, new TFT display, new lighting and new chassis, new design, पूरा न्यू है भाई, ब्रांड न्यू comes with ड्यूक 390। पहले बात करते हैं न्यू जनरेशन ड्यूक 390 के बारे में, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो गई है एंड इसके ऑफिशियल सेल्स भी स्टार्ट हो गए हैं। सो गाइस दिस बाइक कम्स विद 399 सीसी इंजन, 39 न्यूटन मीटर्स एट 6500 आरपीएम एंड 45.5 bhp एट 8500 आरपीएम। सो गाइस कंपनी ने क्लेम किया है 170 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड, जो कि गाड़ी को बनाता है माइटी सुपर बाइक। फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो अपने को इसमें देखने मिलेगा न्यू अलॉय व्हील्स, न्यू टीएफटी डिस्प्ले, न्यू लाइटनिंग, न्यू चेसी, सब कुछ ब्रांड न्यू। पर इट कम्स विद सिंगल सिलेंडर, जो कि इसका एक ड्रॉबैक हो रहेगा, क्योंकि जो सिंगल सिलेंडर की वजह से लाइक उसको कुछ हो गया तो लाइक उस पे खर्चे बहुत आते हैं। इफ वो ट्विन सिलेंडर के साथ आता तो लाइक खर्चे कम होते हैं एंड प्लस पावर भी थोड़ा ज्यादा जनरेट करता। सो व्हिच इज अ ड्रॉबैक। इट कम्स विद सिंगल सिलेंडर एंड यहां पे अपने को मिलते हैं दो कलर स्कीम्स, वन इज ब्लैक, वन इज ऑरेंज। And these bikes will cost you around 3,10,000 rupees extra. So guys, क्या ही बाइक बनाई है, मतलब क्या ही भाई साहब क्या मशीन बनाई है निंजा वालों ने। बात करते हैं कावासाकी निंजा 400। What? Bro, what are you talking about, man? हाँ मेरे भाई कावासाकी निंजा 400, जो कि रातों रात कावासाकी वाला ने लॉन्च कर दी थी। इतनी क्रेजी मशीन बनाई है, क्या ही कहना। It comes with 399 cc engine, 37 न्यूटन मीटर at just 8000 rpm, 45 bhp at 10000 rpm। इसमें आपने को दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, one is metallic carbon grey, second one is lime green। And this bike will cost you 5,25,000 extra। गाइस हमारी नेक्स्ट बाइक है Aprilia RS 457। बाइक्स बहुत कम दिखती है इंडिया में, बाकी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है RS 457 with 457 cc engine, twin cylinder, 49 newton meters at 8500 rpm, 47 bhp at 10500 rpm। New look, new machines, everything new and new price too। This bike comes with 4,25,000 extra। नेक्स्ट बाइक जो है वो इंडिया में पहले से थी एंड अभी फिर से लॉन्च होने जा रही है ऑन 20 अक्टूबर 2023। सो गाइस बाइक का नाम है Yamaha R3। सो गाइस इंडियन मार्केट में पहले भी रूल कर चुकी है एंड ये फिर से आ रही है रूल करने इंडियन मार्केट में।
bikes comes with 321cc engine in 9-twin cylinder, 29.6 Newton meter at 9,000 rpm and 42 bhp at 10,700 rpm. New LED headlights, new fairing plus new taller windscreen. This bike is available in two colors. One is black, one is blue. This bike will cost you around 3,50,000 next showroom. Together बात करते हैं TVS Apache RTR 310. Now comes with more aggressive looks and two color options. One is yellow, one is black. Comes with 312cc single cylinder 4-stroke liquid cooled engine and it produces 35.6 bhp at 9,700 rpm and 28.7 Newton meters at 6,650 rpm and it comes with 11 liters of fuel tank and this bike will cost you 2.5 lakh extra price. गाइस यहाँ पे हमने जिसके बारे में बात किया वो थे 2023 के स्पेशल मशीन्स। तो गाइस आप कौन से बाइक लेने के बारे में प्लान कर रहे हो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नहीं कोई बात नहीं, आप नहीं ले सकते तो अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करना, वो लेगा। तो गाइस जैसे आपको बाइक पर्सनली पसंद आ जाएगी तो आप प्लान कर सकते हो लेने के लिए। तो गाइस मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। लाइक अगर आपको बाइक कोई पसंद आती है उसके प्राइस पे अपने को कितना ईएमआई कटेगा, कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कितना बैंक इंटरेस्ट रहेगा, कौन सा बैंक कम इंटरेस्ट पे आपको लोन देता है। तो गाइज इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भगा देना। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राइड सेफ, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।